Is a Raju Sutar is a Pune-based artist and has showcased at Kochi Muziris Biennale, Documenta 13 in Germany, Florence Biennale, and more. He believes in adopting a multifaceted approach towards cultural heritage, and together they have created a beautiful translation of this project, which is also showcased at the Indian Ceramic Triennale in Delhi by the same name, Lost and Found. If you have not had a chance to go view it, please do. It's up till 31st March, as all Trinales and Binales, have a longer span. This project and this installation, they are a conscious statement to bridge the pedagogical divide between art and craft. They will share today the historical, material, environmental, and creative rigor and reasoning behind this initiative. Welcome, Raju and Rajesh, and over to you. Hi, I'll just share a few slides. After your presentation, we'll open up, Yes. We can just have conversations on observations. Yeah. So can you see this? Yes, very well. Yeah. So yeah, it's a, as you all know, it's a creative dignity initiative. Basically, Lost and Found, the curatorial note is about how craft and art has been divided, as the colonial idea was to divide and rule. Everything is divided. So I think art and craft are not two things. It goes hand in hand completely. So in this narration, I'm just trying to little satirically say that these two brothers were lost in Kumbh Mela and they are coming back with our installation. So basically, we are working in these two clusters. Mostly Rajesh is working in the field most of the time. So he'll tell you about the field more than the actual project. So a little, you all know about creative dignity. And then we'll just go to the idea. Basically, this idea was when Rajesh started studying the Varak cluster and helping them. And then Meera got us on this project, and we went to Kutch, and we also saw some clusters. And Mr. Anand Damle is also helping us in analyzing all those technical things. So in this project, basically, what we found was when we were in the field, when we visited, there are this basic common factor, which was the natural calamity, which was happened in Konkan region, which was Nisarga cyclone, and in Kutch Bhuj, you all know that it's the earthquake prone area. So these two clusters had came up and they were emerged from these two calamities, and I think that one common factor we were thinking of joining it together. So a little history about Varak is basically it's a place near Rajesh's studio, and this place also has a port, ancient port near it, which is called Kershi. And we have found the connect of Kutch Bhuj pottery in Kelshi way back, dating like 2000 years behind. So these are the few things which we actually found on the site. So Rajesh will tell you about the Varak now. Rajesh. So Varak is a small village nearby, and they are supplying essential terracotta items like matkas and cooking wares for generations. Like a barter system, Varak is a Kumbhar ka gaon. So over the years after industrialization, they lost their supply of cooking wares. Cooking wares was replaced by metal wares.
and they are still producing small matkas and reach tiles for the farmers, for the roofs of the farmers nearby. So they are using their local clay, which is refurnished in each and every after each and every rainfall. So they will gather some clay, they will create their own raw mix design, they will create their pottery or the artifacts, terracotta artifacts. They will fire with the local materials and they will supply these two villages nearby. It's a kind of circular economy. It's a very sustainable practice for many generations. But after industrialization and mainly urbanization and the city like Mumbai metro will pull all the natural resources as well as human resource to erect the metro vertically. So the cluster is challenging right now. Cluster is challenging a very big financial crisis, and all the art and craft, कला के लिए कला, ये हम लोग एक अच्छे स्टूडियो में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो उपजीविका के लिए कला वो ही ज्यादा मायने रखता है, और वो अगर यहाँ से खत्म हो जाता है तो वारक जैसा ये conditions, that condition will happen in any situation. Further that the Nisarga cyclone, which was very rare in western coast, so we hit many cyclones in eastern side of peninsular India, but in for the because of the climate change and the global warming, we are suffering extensive climate, sporadic climate, and flood-like situation in this region. So everyone suffered with that cyclone. All the roofs were demolished, and the nature, there was very little casualties, but माल की ज्यादा नुकसानी हुई थी. But as we know कि कुछ भी खत्म नहीं होता और कुछ भी flourish नहीं होता. Like that, after this Nisarga cyclone, from the next year, there was a huge demand for reach tiles, that dhapas. And वो उन्होंने ये वारक के क्लस्टर को वापस रिजेनरेट कर दिया, और जो कुंभार भी नहीं थे वो लोगों ने भी ये पॉटरी सीख के, ये टेक्निक सीख के, उन्होंने 1 2 3 साल वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके लिए उन्होंने प्रयास किए, एंड दे सर्वाइव्ड very nicely. They survived nicely. But as you can see, the working environment and firing facilities for these people, they may lose 60% of material during their ड्राइंग एंड फायरिंग. तो उनकी जो मेहनत है, बहुत ज्यादा जो मेहनत है, वो बहुत सारी वेस्ट हो जाती है ड्यू टू ये जो मिट्टी है, मिट्टी की वजह से, और फायरिंग की जो लैक ऑफ फायरिंग टेक्निक्स की वजह से. और उसका जो डायरेक्ट रीजन जो है, सो आवर क्राफ्ट और क्राफ्टमैनशिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. और वो जो है, वो इनके प्रोडक्ट को अगर उतनी उचित कीमत नहीं मिलती तो उनकी प्रोसेस वो इफेक्ट हो जाती है. दे विल ट्राई टू कट द प्रोसेस वैल्यू, और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट कटिंग है ना, वो एक विशियस सर्कल में वो अटक गया, और ये हो रहा है. तो हम लोग यहाँ जो इंटरवीन करना चालू कर दिए, तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द इश्यूज, और कपल ऑफ इश्यूज. वो जो एक जो है वो रॉमिक्स डिजाइन का है, और दूसरा जो है वो फायरिंग फैसिलिटी का है. And after meeting Meera, we had a very nice and wider vision कि ये जो एक दूसरे पॉटर का ये इशू नहीं है, इट्स अ वेरी large and collective issues related with very different aspects. मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, अर्बनाइजेशन का है, क्लाइमेट चेंज वाली चीज है.
So why don't we start working on these issues? So we started documenting firstly raw mix designs. ये in situ कंडीशन क्या है, कौन सा ये मिट्टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोकन रीजन हैज अ स्पेसिफिक lateritic type of soil, and it's a very unique soil in Konkan region and the western part of Sahyadri. Eastern part of Sahyadri has a very little different from this type of clay. So with the help of Anand Tamle, we started documenting all the technical aspect of this. हम लोग जो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं. सो डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर द सॉल्यूशंस. और जो सॉल्यूशंस चाहिए वो हाईटेक वाले नहीं चाहिए, वो वेरी लो टेक सॉल्यूशंस वी विल प्रीफर. सो क्योंकि आकार की हमारी जो प्रैक्टिस है वहां उनको हम लोग जब लेके आए तो दे फील लाइक दिस इज एन एलियन यूनिट, ये तो मिट्टी का है लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे इस तरीके का काम. सो दैट पार्ट और दैट क्लच वो मीरा जी के साथ में हम लोगों ने करने की कोशिश की. और सिमिलरली जहाँ रॉ मटेरियल अच्छा है, जहाँ क्राफ्टमैनशिप अच्छी है, जहाँ पुराने तरीके से मतलब जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है वो कच्छ का जो रीजन है वहां कंपैरिजन ये मिट्टी से हम लोग करना चाहते थे. तो ये कच्छ का जो रीजन है एंड वी इंटरेस्टिंगली फाउंड कि वहां भी अर्थक्वेक की वजह से कैलामिटीज बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत ज्यादा डिमोलिशन हुआ था. लेकिन बहुत सारी वहाँ हेल्प आने के बाद में, क्लस्टर एक साथ आने के बाद में, जैसे रमजू भाई और बाकी ये सब जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेशन करने के समय उनको एक साथ लाया गया और उन्होंने काम करना वापस चालू कर दिया. तो कितना भी ये नेशनल कैलामिटी आने दो, कुछ भी होने दो, ये कंप्लीट डिमोलिश नहीं होने वाला. तो कच्छ के विजिट के दरमियान वी वेर एक्सपेक्टिंग सिमिलर क्ले, बट वहां जाने के बाद में पता चला कि हर रीजन की क्ले बहुत यूनिक है, बहुत अलग टाइप की क्ले है. और जो हमारा जो इंडियन पेनिनसुलर जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, जैसे हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जैसे हमारी क्राफ्ट डाइवर्सिटी है, वैसे ही हमारी जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़िया है. और कच्छ रीजन में एक 4-5 टाइप की जो क्ले है, जो इरिड टाइप की क्ले कही जाती है, वो पॉटरी बनाने के लिए उसमें ज्यादा रॉमिक्स डिजाइन की जरूरत नहीं होती. सो वी फाउंड वन इंटरेस्टिंग क्ले इन टूना, जो ये जो मटके जो बनते हैं, जो गड़े जो बनते हैं, this is, I think Raju, this is tuna, no? Tuna, yes. Yes, this is tuna. So वो लोग क्रिक सीड्स वो प्रोक्योर करते हैं, मतलब जो फुल मून के बाद में वहाँ के कोई एक्सपर्ट या फिर जानकारी वाले लोग रहने वाले वहां जाके वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रीजन की जो क्ले है वो इंटरेस्टिंग है, वो लेके आएंगे और उससे ये पॉट्स बनवाएंगे. सो क्ले विल ऑल्सो डिसाइड विच एटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड. तो ऐसे नहीं होगा कि ये पॉट्स में अलग ये होगा. तो culture will dominate, raw material will dominate, and skill will dominate which atoms to be are going to be shaped. तो यहाँ के challenges अलग थे. जैसे आप पीछे देख रहे हो कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है. बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट वो कम करने के लिए ये फायरिंग कॉस्ट, as all you know, firing is the heart of the प्रोसेस. ये फायरिंग कॉस्ट कम करने के लिए ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रेडीमेड गारमेंट वाले आसपास की जो कंपनियां हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सब उठा के ये जलाने के लिए ये लेके आते हैं. सिमिलरली ये धारावी का अपना जो क्लस्टर है वहां भी वैसे ही होता है. वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारा यूज करते हैं एंड दे फेस अ वेरी लार्ज, very large health hazards, very big health hazards.
तो वो एक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, और सिमिलरली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेडिशनल, ये दिस इज द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्ले, जहाँ जहाँ ये पहले लकड़ी से ये जलाते थे, बट आजकल वो जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक मटेरियल से जला रहे हैं, तो बहुत सारे एफ्लुएंट्स और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं जो बहुत ही हैजार्डस मटेरियल है। यहाँ और एक हम लोगों ने ये देखा कि रूटैक ने इंटरवीन करके खमीर खमीर का इनिशिएटिव है, और रूटैक की टेक्नोलॉजी जो है वहां से उन्होंने वो कुछ किल्स के सॉल्यूशन उनको दे दिए, और उसके बाद में वहां की एनर्जी एफिशिएंट जो किल्स है वो बननी चालू होगी। एंड वी फाउंड सम we found some interesting interventions with खमीर खमीर उन्होंने जगह जगह जाके ये टेक्नोलॉजी लोगों को ये करने के लिए दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दूसरा इम्पैक्ट यहाँ ऐसा है कि साइड में जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है, जो टाइल इंडस्ट्री है और सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है, तो वहाँ की कुछ मशीन्स और कुछ क्ले प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स है वो ये क्राफ्ट क्लस्टर ने अडॉप्ट कर ली है, और वो अडॉप्शन जो है वो उनके हिसाब से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो वी आर वेरी मच जुगाड़ू, और वो जुगाड़ करने का बहुत अच्छा जो अटेम्प्ट है वो रमजू भाई के पास है, वो अली भाई के पास है, वो सब जगह हमें देखने के लिए मिला। सो so like our farmers, our craft persons are also very innovative, और जो सिचुएशन है उसमें उनको काम करना ही है। उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि मैं कला के लिए कला करूं। फिर भी अगर ये आप पॉट्स देख रहे हो जो स्क्रीन पे है, वो इतने ब्यूटीफुल है, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया है, और उनके बारे में वो बात करते समय भी इतने प्यारी बात कर रहे थे, एंड वेरी हम्बल एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन। उनको खाली एक ही रिक्वायरमेंट थी कि ये बारिश के दरम्यान अगर कोई शेल्टर है तो उनका ये प्रोडक्शन है ना वो एनहांस हो सकता है। सो वेरी स्मॉल वेरी लिटिल रिक्वायरमेंट्स which were heard by CD, and CD is taking initiative to resolve their issues। तो ये एक बहुत अच्छी बात हम लोगों ने वहाँ देखी। But Raju, you can Yes. add more things Right. No, which I'm missing. no, actually, you were there almost there. So basically, we had a good interaction with these people. We found, unlike Vara, the clay bodies were very refined, and these clay bodies were defining what they were making. And in a very close areas also, there's a very total different clay. So we had a dialogue with these artisans, and they're actually using it optimal completely. So there are different ways of interventions which were needed, so that we will talk a little later. So now we go towards the experiments which Anand and Rajesh has did. So Rajesh, can you tell about experiment? So we in Indian Peninsular total strata, we had a very unique clay in Gangetic Belt. It's from Pakistan to Bangladesh. वहां आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मिट्टी लेके आओ, उससे मटेरियल्स बनाओ। एरिड साइड की जो गुजरात और जो राजस्थान वाली जो क्ले है वो मिट्टी के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स बनवा सकते हो। But in Western Ghat, the extreme climate, extreme humid climate, and in tropical area, the lateritization happened very long period ago। और ये लैटराइटिक जो सॉइल है वो पॉटरी के लिए इतनी यूजफुल नहीं है। और इवन द डेक्कन प्लेटो वाली जो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो भी एकदम जो पानी डालने के बाद में स्पेल होगी और सूखते वक्त बहुत ज्यादा क्रैक्स क्रिएट करेंगी। तो ये दोनों जो क्ले है वो इतनी अप्रोप्रिएट है नहीं।
तो इसकी वजह से यहाँ की पॉटरी बनवाने के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेशंस आते हैं, और जो लिमिटेशंस वो ओवरकम करने के लिए वो लोकल मटेरियल्स ही इस्तेमाल करते हैं, लाइक राइस हस्क एश, दे विल यूज राइस हस्क एश एज अ filler, which will be act as a silica or the glass former at higher temperature, but not the temperature on they are firing. तो हम लोगों ने ये जो एरिड वाली जो क्ले है, जो भूज वाली जो क्ले है, और वो वेस्टर्न घाट वाली जो क्ले है, वो सिस्टमेटिक अप्रोच से वो ब्लेंड करना चालू किए. हियर यू कैन सी द original clays, and the clays are blended with the western ghat clay with the interval of 20%. We need to explore more in between 20% and 80% or and such that. So यहाँ आप देख सकते हो कि these are the firing samples and the blends, and ऊपर जो है वो अलग अलग जो पॉट्स है. तो ये डायरेक्टली कुछ पॉट्स हैं जो व्हाइट स्कम जो दिख रहा है वो वहाँ के जो सॉल्युबल सल्फेट्स है वो एक्सट्रैक्ट होके आए हैं. और बीच में एक दो पॉट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो जहाँ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की क्ले एक साथ आने के बाद में वो बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग अर्दनवेयर क्ले अपीयरेंस वहां से मिल गया. सो इंडिविजुअल क्ले के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, उसका कलर अलग होता है, उसके स्वभाव भी अलग होते हैं, और जो ग्रुप में आने के बाद में वो अलग बिहेव करती है, और वो एक साथ अगर सही तरीके से वो ब्लेंड घुल मिल जाती है तो बहुत अच्छा एक यूनिक रॉमिक्स डिजाइन हमें मिल सकता है. एंड दैट इज द मेन टारगेट, टू प्रोवाइड सम Romix design solutions to Varak cluster and more refinedness to Kutch cluster. वही मिट्टी है, वही मिट्टी आकार के पॉटर के हाथ से अगर निकलती है, और वो जो रिफाइननेस है वो देखने के बाद में वो पता चला कि अरे ये इतना ब्यूटीफुल रॉमिक्स डिजाइन है, इतना ब्यूटीफुल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, तो उसकी जो लिमिट्स है वो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उसको लिमिट तक उसको लेके जाना चाहते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट कंप्लीटेड. वो हम लोग कर रहे हैं. उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें जो सॉइल टेस्टिंग है, जो उसका एक रिपोर्ट भी वो लॉस्ट एंड फाउंड का जो ये दिस इज द अप्रोच, ये ग्रेन साइज एनालिसिस है. उसके बाद में उसकी प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये सब करने के बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चलती है. वी वांट टू क्रिएट such kind of database in complete Indian एरिया, मतलब जियोलॉजिकल, जो एग्रीकल्चर के हिसाब से है और जियोलॉजी के हिसाब से है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला डेटा बहुत ही कम दिखाई देता है, तो वो पॉटरी के लिए वो इसेंशियल है. सेकेंड थिंग वॉज, ये अप्रोच के बारे में ऐसा था, वी आर लूजिंग सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स, नेचुरल फाउंड रॉ मटेरियल्स रैपिडली, एज वहाँ की फतेहपुर वाली जो क्ले है तो उनकी क्ले खत्म हो रही है. वारक वाली जो क्ले है वो किसी दूसरे ने वो जमीन परचेज कर ली, एंड दे आर नॉट अलाउिंग देम टू dig clay from that region. Even in टूना, जो कोस्टल वाली जो क्ले है, जहाँ की कोई मतलब कोई मायने ही नहीं रखता वो सब कोस्ट लाइन जो है वो कंटेनर यार्ड के लिए अदानी साहब ले रहे हैं, एंड दैट सोर्स विल बी कंप्लीटली जाने वाला है, वो नहीं मिलने वाला है. एंड और रिहेबिलिटेशन और ये इसकी जो पॉलिसी है, तो वो लोग सीधा 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 उनको बोल देंगे कि ठीक है, जाओ ना, आप दूसरा कुछ काम कर लो. बट वहाँ है, हम लोग इतने सालों से, इतने जनरेशन से ये क्राफ्ट करते आ रहे हैं. सडनली समवन विल टेल यू कि अरे ये मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है और आप नहीं कर सकते हो, जाओ कहीं इसमें जॉब कर लो. सो अडानी के साथ में या फिर वो स्ट्रैटेजी के साथ में वो जो फाइट करने वाले हैं वो तो करते रहेंगे. हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, तो वी थॉट कि वो चलो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
और उसको अगर हम लोग उसके बाद में उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर हमारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर हम लोग बना पाएंगे, देन वी विल एबल टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशन टू द क्लस्टर। और ये शिफ्ट है ना, इतना आसान नहीं होता कौन सा भी। आप फार्मर्स को बोलो जॉब कर लो, तो आप इनको भी बोल सकते हो ना कि जो शेयर मार्केट में लोग हैं वो आके यहाँ हल चलाया और फार्मिंग करे, इतना आसान नहीं होता। तो क्यों हम लोग ये टूना के पॉटरी के लिए ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाले विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टमेटिक अप्रोच। और सेम थिंग विद विथ किल फायरिंग। और जो खमीर ने वहाँ इनिशिएटिव लेके जो किल के सॉल्यूशन दिए हैं, तो वी वेर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द सिंपल सॉल्यूशंस। उन्होंने एक राट्रा बॉन्ड लेके बहुत एनर्जी एफिशिएंट किल्स वहां बनवाई है। और रमजू भाई जैसे लोग हैं वो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको अल्टर करके वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो वही अप्रोच अगर हम लोग यहाँ करते हैं, तो तो यहाँ भी वो इंटरवेंशन हो सकता है। ओनली थिंग इज कि हम लोग कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी देते हैं तो वो अडॉप्शन का रेट थोड़ा कम रहता है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप किल्न बनवाई है। और दैट किल्न उसमें ये होने के बाद में, मतलब फायरिंग होने के बाद में, ये किल्न बिल्डिंग है ऑन ऑन अ डिजाइन। ये घटित ने ये डिजाइन और प्लान शेयर किया था, और वो हिसाब से हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये किल्न बनवाई। और इसमें अभी हम लोग ट्रायल फायरिंग उनसे करेंगे। वो भी स्ट्रैटेजी मीरा जी ने बताई है कि वहां हम लोग उनसे जो ग्रीनवेयर जो पॉट्स है ना, कच्चे जो पॉट्स है, वो उठा के लेके आएंगे और इसमें फायर करेंगे। एंड प्रैक्टिकली वी वांट टू शो देम कि ये जो आपका ब्रेकेज ड्यूरिंग फायरिंग वो कम हो गया है। तो ये एक प्रयास है। तो दिस एक्सपेरिमेंट्स आर ऑन गोइंग, वो पहले से चालू है। और ये लॉस्ट एंड फाउंड का जो आईसीटी का जो प्रेजेंस है उसके बाद में भी चालू ही रहेगा। Very राजू, over to you. interestingly, Varak में Rajesh, you can tell about this ladies who are Yeah, yeah. experts. Yeah. So, as you all know, firing is a very crucial and heart of the process. एंड फायरिंग के दरम्यान ही बहुत सारी वो भट्टी जमनी जो होती है ना, वो भट्टी की बात जो होती है। सो देर आर टू लेडीज जो सास और बहू है। तो दोज आर द एक्सपर्ट वंस। और भारत के लोग बहुत सारे जो जब भी उनको फायरिंग करना होता है, तभी दे विल इनवाइट दोज टू लेडीज एंड दे विल फायर, they will monitor their firing throughout the process, and the success will be much higher. The Barak people were discussing about the community kill, and we thought कि अगर ये community kill अगर हो जाती है, and we show them ये कैसे करनी है, ये कैसे फायर करना है, so that couple of ladies will definitely help all the cluster to get their products properly fired. So that is one a very nice example. Yeah. This is the installation at ICT. I would like you to just have a look and tell me whether this is art or craft. Yes. Yes. Suruchi. Rajesh, Raju, would you also want to share how women are at the forefront of the Varak cluster when it comes to the pottery initiatives? Besides these two women that you spoke about, as the firing experts as they've become. But there are other women also, right? Because of the migration issues that the men have moved out. तो थोड़ा उस Yes, बारे में भी yes, बताएंगे? yes. मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ की कौन सी भी जो अगर सिस्टम है, वहाँ की एडॉप्टेशन फीमेल्स बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। और मेन्स आर ऑलवेज वनरेबल ऑन ऑन देयर प्रेजेंस, ऑन देयर देयर मतलब जो जॉब्स होते हैं उसके लिए भी, वहाँ वो यहाँ जॉब देखेंगे, उसके बाद में वो यहाँ से बम्बई निकल जाएंगे। बट दे आर स्टिल देयर एंड दे विल वर्क थ्रू आउट द डे। सुबह उठ के वो खेती का काम करेंगे, घर का सामान पूरा ये करेंगे। कोई
रसोई का काम है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, कोई गेस्ट आते हैं वो सब करेंगे। डेली कोर्सेस उनके जो है वो हटने वाले नहीं है। और उसमें समय निकाल के दे विल स्टार्ट डूइंग पॉटरी। सुबह का थोड़ा वक्त निकालेंगे, दोपहर का वक्त निकालेंगे, और वो कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। और all this knowledge is passed from generation to generation. अगर हम लोगों ने बोला कि ये आप कैसे बना सकती हो, तो शी विल टेल वो हमारी काकी थी, वो हमारी नानी थी, उन्होंने सिखाया। और शी यूज टू बिल्ड टॉलर पॉट्स, अभी हमें नहीं पता होता है, लेकिन शी यूज टू दैट। तो ये आज का नहीं है, आज का प्रेजेंस नहीं है। फॉर द जनरेशंस, the females are working very hard, and they are creating very beautiful pottery, very with a very basic material. आप उसमें दो अलग मटेरियल्स देख सकते हो। जो एक तवे, जो तौली जो है, जो राउंड ये जो है उसका फिनिश देखिए, और जो नीचे वाला जो ढापा है उसका फिनिश देखिए। ये वेरी बेसिक रॉ मटेरियल है, और वेरी बेसिक रॉ मटेरियल से ये लोग काम कर रहे हैं। और जब भी इकोनॉमी फीमेल्स के पास में होती है तो वो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। हम लोगों ने उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। और उन्हें बहुत सारे फीमेल्स ने वो एनरोल भी किया, बट दे कुडंट अटेंड बिकॉज द प्रायोरिटीज जो है ना वो उनके ट्रेनिंग के लिए नहीं थी। So we are now planning another training program at their place. उनकी उनकी जगह जाके उनका जो स्लॉट रहेगा ना, वो पूरा काम खत्म होने के बाद में वहां करेंगे। वो एक करना हम चाहते हैं। बट यस, दे आर वेरी फैंटास्टिक। Yes. Yeah, no, definitely a very concrete step, when it comes to, I think it's also an antidote to, the ills of urbanization, which is the reality, can't even call the ills. But definitely, something there. And also, how gender, they say, is at the forefront of climate change. But I found this very interesting when we were having this conversation that, how imagining it and positioning it in different bioregions is very important. And here I felt, it was a very good instance of the kind of work that you're doing and building community with the women. Community is already there, but what are the kind of contemporary and relevant inputs that we can bring with this initiative? I think we don't need much intervention. Basically, we need to just guide them, and I think they are very comfortable with their own ideas and with their own environment. So if we have very drastic ideas, then I think it will be completely alienated. So very little interventions, I think this should work, and this should work with any other cluster, any other craft cluster, not just pottery. Any other craft cluster. So this can become a model for everything, and we can take this model and we can try it in different clusters. Yeah, and also remember we were also discussing how we are, the initiative in a longer run can create new revenue opportunities by Yeah. presenting a material solution that fits in within the architectural realm also, Yes. with these ridges. So do you want to also briefly just talk about it for 2 minutes? Yeah, Rajesh. Right now, there is a very good initiatives from the architecture for the sustainable architectural practices, and they are demanding local terracotta materials as a pillar slab, as a in situ architectural forms, and many more. Uh, we need to identify the possibilities, and we need to create some sort of products in a quantity to use in the architectural material. So that practice will provide them a good financial backup also, and it will reduce the uses of cement also. That is one another aspect of it. अगर हम लोग कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो टेराकोटा इज वन ऑफ द ग्रीन मटेरियल, बिकॉज इट्स अ सिंगल प्रोसेस कन्वर्जन। टेराकोटा नीड्स अ सिंगल प्रोसेस कन्वर्जन। और आप अगर मेटल और इसकी बात करते हो तो बहुत सारी एनर्जी उसमें अलग अलग प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है। सो दैट इज हाउ इट इज ग्रीनर।
तो वो पुराने जो पॉट्स बनाते थे वही शैलो करके अगर हम लोग स्टैक करके रखते हैं तो एक एक छोटा प्रोजेक्ट दे विल नीड 300 पॉट्स फॉर अ फिलर स्लैब. सो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन इमीडिएटली जो है. देन द टाइल का सॉल्यूशन. अभी एक आर्किटेक्ट की जो डिमांड थी तो उनको रूफ टाइल्स चाहिए थी लेकिन वो गुजरात या फिर मैंगलोर वाली नहीं चाहिए थी बिकॉज इट विल मतलब वो ट्रांसपोर्ट की वजह से वो फ्यूल कंजम्पशन की वजह से वो देख रहे थे. सो दैट अवेयरनेस इज देयर एंड लोकल सप्लाई शुड अलाइन विद देम. Only concern was in current practices they are using the local material renewal with the yearly basis, and they are creating products and selling to the villages nearby. It's a circular economy. If we open this channel to the urban market तो ये रॉ मटेरियल का जो डिमांड है वो क्या अफेक्ट करेगा उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कैसे करें. क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा मतलब जब तक ये हैंडक्राफ्टेड है देन कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने होने वाला. बट इफ इट बिकम्स अ वेरी लार्ज प्रैक्टिस वो मैकेनाइजेशन अगर हो गया तो देन इट विल क्रिएट सिमिलर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्रॉब्लम. सो वो एक थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा. So this is a better approach, like getting this craft in the sector of architecture rather than creating urban-centric products, decorative products, because that market is a very fluctuating. We can call it a fickle market, and that has actually, the craftsman has a purpose to do a thing. And when this urban idea comes to them, they have very little idea and what how it is going to be used and all. So they within like even before they grasp it, the trend is changed. So I think the circular economy and something like the architectural demand will balance the whole thing. That's what I think. Yeah, and I think very critical that, when we talk about balance Yeah. and we do not, create any kind of disequilibrium within the ecology is how one balances and manages the scale, Right. which I think Right. over a period of time, Right. you'll be Right, more right, clear. right, Yeah. right. That was the concern. That was the main concern. कि कैसे जाएं हम लोग आगे. And that's a problem that's epidemic in many craft clusters as we speak, every day. Hmm. Fine. Ghatiji, would you like to add something? I will stop sharing so that we Mhm. all. I was wondering if Ghatiji would want to join Yes. at this point and Yes. share his own experience, with the clusters that he's exposed to, the different issues and how, it's very interesting, it's lost and found in many ways. Mhm. What we've lost, in terms of the geographies, the geological connect, and what we found is a pathway towards solutions. So Ghatiji, आपसे सुनते हैं थोड़ा सा इस पे आप बताइए. For me, it was very heartening to see the way राजेश जी और राजू जी पूरे इनिशिएटिव को आगे लेके गए और सिटी टीम ने भी उसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया. तो इट्स वंडरफुल कि यहाँ की क्ले को कैसे उन्होंने एक पूरा एक क्ले का वोकेब्युलरी खड़ा किया. मैं ज्यादातर फोकस करना चाहूंगा जो हमने जो किल्न के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं कच्छ में. तो का राजेश जी ने लंबी बात कही और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने वहां पे भी एक बढ़िया एक वो सिंपल किल्न बनाई है. ये एक रूटेक करके आईआईटी का एक यूनिट है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप. और तकरीबन 3-4 साल पहले उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन हमको मिला था कि वो कुछ किल्न डेवलप कर रहे हैं. तो उसको लेकर हमने एक एक्सपेरिमेंटल किल्न भुज में पहले बनवाई थी और उसके बाद वर्कशॉप करके हमने पोटर को यहाँ पे बुलाया था और पोटर्स ने देख
के क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखना चाहते थे, क्योंकि आईआईटी की डिजाइन और उसके बारे में तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई, लेकिन पोर्टर्स के लिए क्या उपयोगी होगा, तो उसको लेकर देन पोर्टर्स ने हमें कहा कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छी है। उसके हिसाब से हमने हर विलेज में एक या मैक्सिमम दो ऐसा ट्राई करके वो हमने किया था। एंड इट इज अ वेरी सिंपल डिजाइन। उसके एक फैकल्टी है मिस्टर एम आर रवि, और उनकी वाइफ है संगीता। उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके कहीं ट्रेडिशनल क्लस्टर में से ही इसका बेसिक फॉर्मेट लेके बाद में उन्होंने उसको थोड़ा थियरेटाइज किया है और उसको डिजाइन को चेंज करके ये बनाया है। और तकरीबन 30 से 40% फ्यूअल एफिशिएंसी है इसमें, क्योंकि हम तो जो वर्कशॉप हुआ उसके बाद हमने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि हम 10 किल बनाएंगे एक साल में। तो हम धीरे धीरे उसमें काम करते रहे और आज तो तकरीबन 10 नहीं, हम 13-14 किल पूरे कच्छ में अलग अलग क्लस्टर में बनाए हुए हैं। और एक नेक्स्ट राउंड भी हम करना चाहते हैं जिसमें हम यंग जनरेशन जो वोटर्स है वो ये क्लस्टर वाइज जिम्मेदारी ले और इसको आगे ले जाए। ये हम करना चाहते हैं। राजेश जी और राजू भाई के साथ एक छोटी ही मुलाकात हुई थी। हम उनका जितना लाभ हमको अभी लेना चाहिए इतना नहीं ले पाए हैं ऐसा, तो हम आगे भी काम करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा इतना इंटरेस्टिंग वे में ये सब दिखाने के। थैंक यू। Thank you, Gatit. Thank you. Thank you, Gatit ji. Meera, would you like Yeah. to add Yes. I something? would about to say मीरा जी का Yeah, ये yeah, comment बहुत absolutely. जरूरी है इसके ऊपर। Thanks, Rajesh, Suruchi, Raju. It's been such a pleasure to work with both of you. I have, of course, done a little work with Rajesh earlier, and his work is really, he has gone to like the depth of everything. I encourage all of you to visit his studio at Indapur. He is from Indapur. There was no history of any rich traditional practice like how Kutch has, but he has really built an identity with the simple Indian pot. And he has taken it to a different level altogether through his experimentation, his understanding of clay, his deep immersion in the region. And of course, he himself has been involved in a lot of the regeneration work that happened after the flood and in all the other, aspects that happen over there. So I have always been very inspired by him. And when this opportunity came up to do an installation at ICT, I felt it could be a stepping stone because we realize now at Creative Dignity that, we came together for the pandemic, but the larger crisis of, craft and artisans and the handmade industry, it continues. And it has been there even before the pandemic, and it continues even today. Now it has got new challenges that what Rajesh and Raju have been talking about, of deteriorating raw materials, of lack of access, of conflicts with farmers or other people who hold the resources, who control the resources. So there's a whole lot of new challenges now, and the craft practices which actually have the potential to really lay the groundwork for positioning themselves as livelihood options that are not carbon intensive, that are embedded in a cultural ethos, that has so much potential. We stand to lose all of that if we don't start addressing this. And to that extent, even this whole craft into climate initiative that CD began is a step towards that. I mean, of course, the talks are a beginning, but we really want to build a common understanding because given the plurality of geographies, of practice, of skill, of understanding, across our country, what is it that can bring our sector together, and how can we build a common narrative together? How can we help each other? How can we take on research? How can we take on pilots or modeling that will actually create ways forward for us to really position ourselves as a green economy? So I think this effort, even being at the ICT, talking about these issues, was a step in that direction. And
we're going to take it forward from here. It doesn't end here. And in fact, Raju has already threatened us, saying that he's thinking very big. So I'm going to wait to hear that from him. I'm a little worried about it, but yes, we are ready to take it on. Yeah. But I think it would be really good to hear from others. I'm sure there are lots of questions, and No, Meera, don't worry. It's not going to be that big also. yes, small is beautiful. Let's have some questions and observations that you have after listening to this extensive presentation. Sachi, would you like to add something? I'm just reading the information you shared on the chat. As a fellow potter, as a fellow ceramic artist, would like to have your comments. Hi, am I audible? Yes. Yeah, so I'm so grateful to be here attending this session. I began my initiative called Terracotta by Sachi during the pandemic, when exactly when Hand for Handmade and Creative Dignity were started. So basically, I was doing a campaign with them called I Made This, hashtag I Made This, and that's when my venture was born. And I've been trying to, in my own small humble way, trying to sustain these artisans into their own pottery practices, traditional pottery practices. And I was not aware of this particular cluster because I was more exposed to UP and Manipur and Gujarat. Gujarat, yes, of course, I've been working with Khavda and Gundyali, but I would like to, if any way possible, can I connect with the initiative, or any way that I can contribute in terms of market connect, or training, or whatever is required. I would be more than happy to connect. Yes, Sachi, definitely we'll reach out to you. And in fact, we have to actually regroup after the whole installation at Delhi to see how this initiative moves forward. Also, Rajesh has a wadi in Indapur where he regularly conducts training, workshops, classes for students or anyone interested to engage with pottery. That's also where all the experiments have happened. So our next phase is really to bring together potters from different clusters, like how we did with Kutch and Varak, and to kind of get these synergies going between clusters, that is supported by also the clay research and the clay the clay experimentation that Rajesh has undertaken. So I think we have a long way ahead of us, and it would be great for as many people to join as possible, because we'll be in touch. It may take time, but yes, we'll get Yes, yes. I would be happy to join anytime that it is required, because I think I have only been scratching the surface. This is real deep, experiments going on at the cluster. Actually, I've been sitting here in Delhi and operating my business, but I think I need to venture out of Delhi and be there on the field. So I'll be happy to. Thank you so much, Meeraji. Thank you. Thank you, Sachi. Manmala, would you like to say something? You're a potter. Hi. Yeah, sorry. Yes, Kundan, go ahead. Yeah, so I have a question. I'm a journalist, first of all, I would like to inform. I represent Mongabe, India. So I was just wondering about the scale, where we are in terms of where we are still doing the experiment, or somehow we have brought this clay to the ground and some artisans are using it. So at what stage we are in our experiment? Rajesh, would you like to take that? हाँ, ये 2-3 एस्पेक्ट में यहाँ का जो बेंचमार्क पॉटरी जो है वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, एक जो फॉर्म्स के हिसाब से, और बहुत सारे लोकल पॉटर्स, नॉट फ्रॉम द वारक ओनली, बट द पॉटर्स फ्रॉम कोल्हापुर, पॉटर्स फ्रॉम सातारा, even they are inspired, and they visited Akar, and we shared some raw mix design approaches to them, and they experimented with their
available local materials. Initially, they were asking for the raw material which we are using. We provided them and immediately said that don't use this or don't depend on this raw material. You create your own raw material that will add the flavor to your products. And many potters, I know 4 of them, Shubham and the lady from Satara, and third one is name is Jayesh, and all these potters are working. They are inspired by the Romix design experiments done by Akar. One of the potters from Kolhapur, he wanted to learn pottery at Akar, and we realized that even Miragi was connected with and giving many inputs to throughout this journey, and we offered Shubham a voluntarily internship to practice his skills at this place, and within a within a month he refined his pottery. So it is happening slowly, but many potters are. और जो सातारा की लेडी जो है ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि you are selling your product for ₹500, that's why we are getting ₹300, otherwise वो 100 ही रुपए मिलते थे. So that is also indirect impact is there, so benchmarking is there. Yeah. So And there's yeah, sorry, go ahead, Raju. Yeah, there's a parallel agenda as well. So with these installations, I want the Ismail Bhai and Varekar to to be next to Subodh Gupta's metal vessels. They will also have their earthen pots. So that's another parallel story we are working on. So Kundan, just for also to somewhere address your question, see the potters in Kutch now, their market is more or less, it has picked up. So despite all the plastic and the metal and the alternatives and all of it, for some reason the local market is still thriving. There are few artisans who have really gone very far. They've got awards. They've mastered all kinds of techniques that even traditionally they were not doing. So there has been, and Kutch generally, because of the tourist boom, there has been a good economic growth even for potters, who are actually like normally the lowest in the whole the sort of hierarchy of artisans in Kutch. They're doing well. In Varak, what we found was that the local economy still continues. There was a boom recently, some time back, because of what Rajesh explained, because of the flood, and there was a demand for the roof tiles, which were revived again. So in both cases, it's not as though the potters don't have work. They have work, but the question is that to what extent will they continue to sustain it if they are not going to be, getting enough value for what they do. And I think that's really a challenge, that all the other factors of deteriorating raw material, of stagnating markets, of continually innovating, where do those opportunities come from? They come from opportunities like this, when people like us are able to be enabling factors to bring about this kind of catalytic change. So I think that's really the where we are at. Great, thank you. Really impressive effort by everyone. So, as a journalist, I will really need your support. I want to write on these things. So, how can we exchange the number? Is it a right platform or somewhere else? Yes, I think Suruchi will get it. Suruchi herself is a journalist, or was a journalist. She invited my Yes. editor, so he Yeah. forwarded that thing to me. Right. I'll be in touch, Kundan. We'll Yeah, be happy great. to support you with all the information. Thank you. So glad you've joined. Because I remember Mongawe had done a story on the Tuna region. And so I thought, this could be of interest. Yeah, and he forwarded that invitation to me. So Wonderful. Vanmala ji. Yeah, we'd like to hear Vanmala. Yes. Namaskar. Good evening. Very nice initiative. और
राजेश जी का काम तो मैंने काफी बरसों से देख रही हूँ और उनको जानती भी हूँ। मेरा इसमें सिर्फ एक ये है कि हम जैसे हमको भी पता है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आई इट्स ओके इफ शुड आई स्पीक हिंदी और इंग्लिश और Anything. बोथ आर ओके। Both are okay. Yeah. सो बहुत सारी कंट्रीज में जैसे जापान में, चाइना में, अब जैसे पोर्सलिन मिलता ही नहीं है। पोर्सलिन के लिए क्योंकि माइंस नहीं है या माइनिंग नहीं होने दिया जा रहा है। वही हाल हिंदुस्तान में है। बहुत जगह क्ले मिलती नहीं है। उसके दो कारण है। एक तो जैसे बताया कि अदानी जी ने पूरी जमीन खरीद ली है, ऑब्वियसली वो नहीं देने वाले हैं। आप उनके कितने भी हाथ पैर जोड़े, सो उनको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं खुद पिछले 50 साल से क्योंकि पॉटरी कर रही हूँ इसलिए देख रही हूँ कि रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड ओवर देखें, पॉटरी में मिट्टी बनाने वाले लोग हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो गांव में या जो लोकल क्लस्टर है जहां भी है, वहां पर अगर लोकल मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर से क्यों नहीं खरीद सकते मिट्टी? क्योंकि अगर आप देखें जितने भी स्टूडियो पॉटर्स हैं, आज तो केवल स्टूडियो पॉटर्स ही ज्यादा है, लोकल पॉटर्स हैं ही नहीं। और क्योंकि लोकल पॉटरी से लाइवलीहुड इतना नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर देखेंगे धारावी में भी, बाकी सब जगह भी, कच्छ इज अ वेरी डिफरेंट यूनिट। वो अकेला एक प्रदेश है हिंदुस्तान में जहां आज भी लोकल पॉटर्स पॉटरी करके बेच रहे हैं। बाकी आप महाराष्ट्र में देखिए, गांव में जाके देखिए, लोग मटका भी इस्तेमाल नहीं करते। सो पॉटरी लोकली अगर देखी जाए तो खत्म हो गई है। तो अगर हम इन पॉटर्स को हेल्प कर सकें, जैसा आप लोग कर ही रहे हैं कि 2-3 जगह की मिट्टी मिक्स करके, तो अगर हम मिट्टी प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो जो लोकल पॉटर है उसकी उतनी मेहनत उसे नहीं करनी पड़ेगी। वो जो मुशक्कत करता है कि यहाँ से मिट्टी लाओ वहां से लाओ, वो सब उसको रिलीफ मिल जाएगा। So that is one way in which we can actually help the local potters. Number two, which I very, very strongly feel, जो आप कर रहे हैं कोशिश, और राजेश तो कर ही रहे हैं, वो लोगों को सिखाने वाला या जो भी उनके यहाँ आके सीखते हैं, हम जो लोकल स्कूल्स हैं वहां पर अगर पॉटरी सिखाना शुरू कर दें तो शायद उसका थोड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो जितने भी आर्टिसंस हैं, जितने भी विश्वकर्मा लोग हैं वहां पर, वो बच्चे अगर पॉटरी सीखने लगेंगे तो पॉटर्स का वहां पर लेवल बढ़ेगा, मतलब रिस्पेक्ट। और फिर काफी लोग वहां पर सीखना शुरू कर देंगे। ये काम मैंने करजत में किया है और काफी लोकल स्कूल्स में सिखाने की वजह से अब काफी बच्चे मेरे पास करजत में आ जाते हैं सीखने के लिए। आज तो मैडम आई हुई है, चलो सीखेंगे, वो क्या आप सिखा सकती हैं। सो अल्टीमेटली वो जो पॉटरी स्किल का जो लेवल है वो अपने आप बढ़ने लगेगा, मतलब उसके रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। सो माई होल थिंग, टू थिंग्स जो आपके कॉन्वर्सेशन से लगाए कि लोकल मिट्टी मिलती है बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो आप कर दीजिए बाहर से अगर उनको हेल्प कर सके। और दूसरा, लोकल लोगों को जितना सिखा पाए, इंट्रोड्यूस कर पाए, तो पॉटरी क्राफ्ट सरवाइव करेगा। जी नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप राजेश, आप बताइए, मतलब मेरा ये नहीं जी, इतने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पॉटरी सीखने में बच्चों को बहुत ज्यादा रुचि रहती है, और क्ले का कनेक्ट जो होता है वो रूरल बच्चा होने दो या फिर अर्बन जिसमें कभी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया है, जब भी स्टूडियो में आ जाते हैं बहुत मैग्नेटिकली वो कनेक्ट हो जाते हैं। आगे जाके उसमें जो प्राइड और पैसे वाली जो चीज है, सर्वाइवल वाली जो चीज है, वो कैसे हम लोग हैंडल कर पाते हैं, उससे ये जरूर हो पाएगा। बट पर आप तो योर कर ही रहे बोथ हैं, पॉइंट्स आर वेरी वैलिड पॉइंट्स। आप तो कर ही रहे हैं। जी। और जो पॉटरी का जो क्लस्टर है, विलेज पॉटर्स आर आल्सो गेटिंग इनटू इनटू लाइमलाइट और शेप में आ रहे हैं। जो हम्म। कोल्हापुर से बेळगाव का जो क्लस्टर है वहां भी वो वापस उनको बहुत सारी डिमांड हो रही है। ये हम्म। मिट्टी के लाइफस्टाइल के हिसाब से भी अगर देखते तो बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन और ये हम्म। यूज करना चालू कर दिए है उन्होंने, तो वो हम्म। डिमांड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ। हाँ। हमें उसको उसको खाली डायरेक्ट करके उसका उसका राजू का
हर वक्त वही ये कहना होता है कि प्रोडक्ट उसकी परफेक्ट वैल्यू और उसके पीछे उसको अगर प्राइड मिलती है तभी वो Yes, सस्टेन होने वाला है। absolutely. So if we can give them good products बनाने के लिए उनकी मिट्टी को हैंडल करवा लीजिए जी। और उनका ये स्कूल वाला जो इंटरवेंशन है ना वो मैंने नोट भी करके लिया है। In fact, Rajesh, Khamir has like a proper elaborate curriculum for pottery to Okay. teach us. But maybe at some point, Khamir should share this with the other potters and pottery clusters. Yes. Yes, yes, definitely we will Really share. worked on it. Yeah. We will be very happy to share. Yeah. So maybe we can have one, maybe one trip where all of us go to Kutch and see this in action. And Kutch and Varak. add to Yes, that, and Varak. just And of course, the beautiful museum that Raju Yes. curates, Zafurza in Pune. Zafurza. Yes, I was about to do that at the end to invite all of you to Yes. Let's Zapurza make a Museum. a curated cultural trip. Absolutely. We can't So- have better guides than these two. And it brings me, remember Meera, we once had a discussion on the societal platforms. These are like open digital spaces for anybody to share information. Of course, it's structured in a certain way. But जब आप कह रहे थे घटित जी को कि आप वो मॉड्यूल या जो information है ये share करें, I don't know, I just see there is a lot of potential, the kind of conversation that we are having today, the lost and found. This is, I think, a matter of collective intelligence, everybody pitching in to come to a solution. And we've learned that Khamir also had inter-exchanged this information, then the inter-exchange between Varak and Kutch, which is creating new solutions. Abhi message pe bhi chat pe bola hai कि Delhi में भी ready to ready to use available clay hai, which though I'm very concerned about the carbon footprint this will create, but that's for another discussion. But I think that's very centric to the discussions that we have within craft and climate, and the benchmarking that we are also kind of thinking of. So kafi kuch hai, which one has to look at. But having this open resource that's available for the entire industry, I think, is also something very promising. It Yeah. needs it needs help, and it needs resources and hands. But that's, I think, one of the things, that will see the light of the day. So I think a great session in terms of, this is a big hope, and a big metaphor for, the action that we are all imagining together, which is already in place and will scale up in a balanced way. But, it's very exciting for me because the conversations that we've had so far is showcasing and presenting the work of the industry. But this being a CD curated project, which is also, going to, as I said, will scale up and will become more concrete, more stronger, more diverse. It's quite heartening. Thank you, Meera, Rajesh, and Raju. Thank you. Thank you. Thank you very